हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। टुडे विल सी जो CSIR SO ASO का एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। सो आई हैव हैड अ डिटेल्ड पोल ऑफ बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 और इसके बेसिस पे एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करने के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू द कट ऑफ्स। अगेन द कट ऑफ्स आर ऑलवेज टेम्पररी in nature and it cannot be said with 100% accuracy. As you know, कोई भी अगर कहता है कि 100% accuracy से बता रहा है then it is nothing more than a hoax, a false promise, nothing else. सब झूठ है. So I'll tell you, what I'll tell you is 70 to 80% correct based on my understanding, और इससे ज़्यादा वेरिएशन उसमें होना नहीं चाहिए. I can assure you at least for that 100% होनी चाहिए. Of course the cut off can even go down or up, anything based on the difficulty level of different shift. Again you must be knowing difficulty level है, बहुत कुछ है, normalization है, हम सब के बारे में बात करेंगे. we'll see everything, so do not worry, everything will be dealt कि कैसे करना है, क्या करना है. इसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको those who have missed the cut off, seemingly missed, of course not missed, को लग रहा है कि उनका मिस हो जाएगा, और those who have seem to be qualified, उन दोनों के लिए क्या आगे प्लान एड रहेगा. आई डिस्कस एवरीथिंग. सो ये एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगा रिगार्डिंग CSIR SO ASO. एवरीथिंग विल बी डेल्ट हियर, सो डू नॉट वरी. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं. दे आर अराउंड 2.4 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स in this channel. Now in this channel you get everything related to every exam. So I keep posting new job advertisements. For example, this is an advertisement regarding TBE by Hindustan Aeronautics Limited. Similarly, there are many other job openings जो आए हैं अभी recently, and I have posted all of them in my channel. So you can go and join this channel. This is the first thing that you should do, irrespective of the exam you are preparing, because I keep posting different job openings, almost 1 to 2 job openings daily. I keep posting. तो ये आपको मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक सीरीज चलाया था रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ CSIR SO ASO, एंड दिस एंटायर प्रिपरेशन, आई मस्ट से यू, एंटायर प्रिपरेशन इट वॉज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. द एंटायर प्रिपरेशन, एंड द स्टूडेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड इमेंसली. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दे हैव बीन इमेंसली बेनिफिटेड बाय दिस. उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. नाउ एज अ टेस्टिमनी टू दैट यू कैन सी दिस. This was the group we created. It had more than 3,000 members, as you can see. Now some have left. Of course, the exam is over without realizing कि इसका ज़रूरत आगे भी पड़ेगा. So you can see 3,000 ज़्यादा लोग थे, and the entire preparation was totally free. Everything you were given, all the MCQs, resource materials, preparation strategies, PDFs, etc. Everything was given. And trust me, the strategy I told and the subject wise weightage along with the return on investment that I suggested, that was really very helpful. I have got some very overwhelming comments. बहुत लोगों ने बोला कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मेथड मैंने बताया था, किस सब्जेक्ट को हमें प्रायोरिटी देना है. सो द प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स was very helpful, especially in the preparation. So there will be a similar plan for phase 2 as well in the same group. So you have to just go and join this group. Then so the link of the group is @CSIR 2023 SO. You just have to go and join this, and rest assured the entire thing regarding the phase 2 will be taken care of. No need to worry at all. You'll be given daily targets. I'll give you the good strategy to write essay, précis, letter, everything. You will also be given quotes, some fodder material, and of course data. And trust me, बाकी इंस्टीट्यूट की तरह मैं आपको 500 पेजेस या 50 पेजेस के नोट्स नहीं दूंगा. ये बहुत सिंपल रहेंगी एंड रेडी टू यूज़, विच यू कैन यूज़ इन ऑलमोस्ट एवरी एसे. लाइक आई विल गिव यू सम कोट्स एंड सम डेटा that is certainly used in most, or I can say the maximum of the essays and letters. बहुत छोटे PDFs होंगे एंड दिस टू सफाइस. इतना आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा. सो एवरीथिंग विल बी गिवन, एंड ऑफ कोर्स you do have to join this telegram group for all the updates. Now for those who after seeing the cutoffs
they think that they are not able to make it, they can also join this channel. It is very important because henceforth, based on the various requests, I am going to start the preparation for SSC and regulatory bodies एंड बैंकिंग. ये तीनों चीज़ की एक कंप्लीट तैयारी होगी. एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड व्हेन आई से कंप्लीट, इट मीन्स कंप्लीट. देयर विल बी कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर एवरीथिंग द सेम वे एज इट वॉज डन फॉर CSIR. सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी. आपको क्या क्या मिलेगा? फ्री PDFs फॉर एवरीथिंग. यू विल गेट दी डिटेल्ड strategy, handheld guidance, daily targets, the DSP, which means digital smart planner, as was given for CSIR. It was a very smart way of planning. Many people have used it and they told me that it was really very helpful. तो काफ़ी helpful था. So what you can do henceforth for all the exams that you are preparing apart from CSIR, you must join this Telegram channel. Here you will get all the job notifications also that you might miss otherwise. Apart from this, there will be separate groups for SSC, regulatory bodies and the banking, where you will get everything for free. So I'll give the link in this channel. So you must go and join now. Now let's head directly to the cutoffs. Now some presumptions about this cutoff. What are those? First, it cannot be 100% accurate. You must be knowing. And of course, the accuracy that I am assuring is 70 to 80%. इससे ज़्यादा कोई दे भी नहीं सकता है. And anything that will be given, it is just tentative. Rest assured, वो वैरी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. But based on the detailed feedback from the students and the poll that we conducted, in which thousands of people have participated, based on that and keeping in mind the detailed mathematics that is used in the calculation of cutoffs, and keeping in mind the normalization that will be there, I have kept everything in mind, and through that I have made a detailed plan, and accordingly I have reached at the cutoff. So what are the cutoffs? Let's see. This is the poll result. So for paper 1, you can see most of the people are scoring somewhere around 100, less than 100, or 100 to 110. This is the average score that the people are getting, most of them. Of course, again you have to assume कि इसमें जितने लोगों ने ये कहा है, पीपल हु आर इन दी टॉप कैटेगरी, उनमें से मैक्सिमम लोग का तो सही नहीं होता है, और दे हैव यूज सम लिंक एटसेट्रा टू प्रिपेयर दी स्कोर. सो बहुत चांसेस है कि ये जो बाद के डेटा हैं, ऑफकोर्स पहले वाले भी, बट इनका चांस गलत होने का ज़्यादा होता है, बिकॉज पीपल जनरली गिव मोर इन ऑर्डर टू, क्यों आपको पता ही है ना, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए लोग ऐसे होते हैं जो बोल देंगे कि मेरा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, एंड देन ट्राई टू शो ऑफ. सो ऐसे होता है. सो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट आई हैव रिसीव्ड, आई एम एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ टू बी अराउंड 80 to 85. Of course, there can be plus minus 5% error. This is a possibility. But more or less आपका कट ऑफ इतना ही होना चाहिए for paper 1. Now if we see for paper 2, again if we see based on the poll, the maximum people are heading below 130 or 130 to 140. Again, if keeping in mind this population जो कि काफ़ी कम है, so if we make the math and the normalization score that we take, the cutoff should not be more than 100. So the range I can take is 95 to 105. यहाँ प्लस माइनस 5% का एरर रख सकते हैं हम. सो दिस शुड इनवेरिएबली बी दी कट ऑफ. नाउ इफ वी टेक कंबाइंड स्कोर, अगर हम टोटल लें, सो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड द कट ऑफ शुड नॉट गो बियॉन्ड 180 टू 200. दिस शुड बी द कट ऑफ. इन एनी केस ये 200 से ऊपर नहीं जाएगा. आई कैन अश्योर यू रिगार्डिंग दिस. आई एम ऑलमोस्ट 95% श्योर दैट कि ये 200 से ऊपर तो नहीं जाएगा. सो एनीवन हु इज स्कोरिंग अबव 180 to 200, they can rest assured that 95% chances are there, 90 to 95% chances are there that they are going to make it to the phase 2. बट अगेन जिनका 150 से 180 के बीच में भी आ रहा है, यू शुड नॉट लीव द प्रिपरेशन, क्योंकि इट मे हैपन दैट द कट ऑफ माइट गो लेसर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा and their methodology might be slightly different. So based on that, it might go up to 150. So anyone who is scoring more than 150, they have some chances, at least 30 to 40% chances of making it to the final list, phase 2. तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपके लिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर यू? सो व्हाट इज द
way forward. That is very important. Now those who think that there are even slighter chances to making it to phase 2, इनका phase 2 में थोड़ा सा भी चांस है, अगर उनका 150 to 160 भी आ रहा है, then also they should prepare for phase 2. Now again, for OBC, SC, ST, you can take it accordingly. If I am keeping 180 to 1, if I am keeping unreserved for 180 to 200, then OBC and EWS would somewhere lie between 170 to 180, or it can go up to 160. There is a possibility. Again, SC and ST, it can go up to 140 or 150 to 170. So you can mend them accordingly. So this is the broad pattern जो कि मेरे अनुसार कट ऑफ रह सकता है. Again, those who have made it, it's very good. Those who could not, again what you can do, you just have to go to this Telegram channel and head to one of the groups, either for SSC or regulatory bodies or banking, whatever you are preparing. The link for the channel and the group, everything is there in the Telegram, in the description. So you should go and join now. Now again, those who have even slighter chance to prepare for phase 2, do make it, क्योंकि इसमें है आपका English, which is an integral part of all the exams, be it UPSC, be it regulatory bodies, in some banking exams also. So phase 2 of most of the exams has English descriptive. So अगर आप प्रिपेयर करें अभी अच्छे से CSIR के phase 2 के लिए, if you prepare well for CSIR phase 2, then your English descriptive will be very strong. I can assure you this thing. So you must prepare for this, because this English descriptive is very important for all the exams. Again, बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, what is the best way forward, everything will be discussed in the channel. So you must join it. And again, if you like this video, you do please like it, share it, and for all such videos you can subscribe it. So there will be a next video now जो कि आएगा, that what is the way forward after the CSIR exam. And trust me, I am telling you, this will be a gem in itself. This will be a gem video in itself, because I'll give you the detailed way forward that you can take based on your status now, whether you have made it to phase 2 or not. In both the cases, आपको क्या करना है, there will be a detailed plan for that. Just subscribe this channel and it will be good to go. Thank you.